Hi guys, welcome back to channel Crick Beyond. So, a group of club level cricketers are just talking about the experienced champs. So, talking about CSK RCB match, 17 years later, RCB has breached the den and CSK have lost by 50 runs. That's a very big margin that will hurt the NRR a lot, but after 17 years, this has been a big blow to the CSK fans out there. After what happened last year in the rivalry, this is going to be a big blow. It's another upset. Yesterday it was one, today I one don't more agree to upset. the word upset because RCB is having a great team there. To be very honest, Yes, my yes. end, RCB is having excellent team out there. तो मैं इसको upset तो नहीं बोलूंगा. RCB has definitely played a very good game of cricket, and that is the only reason. This is not to be very honest, not an upset for me. Yesterday, I could definitely say that that could have been upset with that bowling lineup of LSG. But आज की गेम तो upset तो नहीं थी definitely because the quality of cricket that RCB has played was यस यस अग्री लाइक ऑन पेपर भी आरसीबी की टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी मुझे कि सीएसके में ऐसे हम लोग ने कल भी बात किया था देयर इज नो स्ट्रांग हिटर अपार्ट फ्रॉम दुबे एंड इफ से आज देख ले ऋतुराज गायकवाड़ फेल होता है तो क्या होता है द डिपेंडेंसी ऑफ देयर बैटिंग ऑन ऋतुराज गायकवाड़ इज अ लॉट like so. I don't see them chasing more than 175 on a regular basis. No, I think they will need to revamp their batting lineup there, but definitely CSK needs to work upon the batting lineup for sure because ऐसी batting lineup के साथ I don't think so that CSK का कुछ होने वाला है to be very honest क्योंकि CSK की कोई lineup ही नहीं है batting की. So I think they will definitely need to rethink about the choices of Rahul Tripathi and Deepak Hooda there because दोनों का दोनों waste है तो मेरे हिसाब से I think they will definitely go back to Devon Conway kicking out Sam Curran from that lineup because Sam Curran is just adding as a Even liability again. even you can take Overton as well. Like he's also great all rounder, hard hitter और like death में भी अच्छा bowling करता है. According to me, if you ask me, the CSK batting lineup should be Rachin Ravindra, Devon Conway, and I think Ruturaj Gaikwad should be pushed back to open. जब वो open करा था, he was excellent on the field. So I think Devon Conway and Ruturaj Gaikwad should open the innings. Rachin Ravindra should come down one down. शिवम दुबे लास्ट ईयर टू डाउन इतना क्लास बैटिंग किया है बंदे ने पूरे सीजन में आई डोंट नो व्हाई इज ही बीइंग पुश टू थ्री डाउन वो उसको टू But डाउन ही शुड बी कंसिस्टेंटली बैटिंग देयर उसका कुछ भी नीड नहीं है अप डाउन करने के लिए so that should be the top four batters Devon Conway coming in so Devon Conway Gaikwad Rachin Ravindra and it should be the Shivam Dube शिवम दुबे and Ravi Jadeja, Ashwin, Dhoni. So that makes it seven. And then it should can be add Overton. Pathirana and Khalil Ahmed. So that should be the lineup. And Vijay Shankar will be coming in as well. क्योंकि हम लोग Even आंद्रे सिद्धार्थ को भी ट्राई कर सकते हैं एंड्रे सिद्धार्थ को ट्राई करते इम्पैक्ट हैं में. आई थिंक विजय शंकर जिस हिसाब से जीटी के लिए बैटिंग करता था तो आई थिंक थ्री डाउन विजय शंकर को आना इज विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज विजय शंकर इज स्टिल गुड बैट्समैन रादर देन वेस्टिंग द बॉल्स आउट देयर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट शुड बी प्रीटी मच सिंपल आउट देयर कि भाई इनको डेवॉन कॉनवे और गायकवाड शुड ओपन रचित रविंद्र शुड कम टू शुड बी डाउन वन डाउन एंड उसके बाद आना चाहिए शिवम दुबे टू डाउन थ्री डाउन शुड बी विजय शंकर उसके बाद रवि जडेजा अश्विन धोनी नूर अहमद पाथिराना एंड खलील अहमद और उनको अगर if they really don't want to change the lineup तो आई थिंक सैम करन के बदले जेमी ओवर्टन शुड बी इन देयर एंड मुझे बॉलिंग लाइनअप पे भी इसके लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि दे बॉलिंग लाइनअप में दे हैव अंशुल कंबोज सिटिंग आउट देयर दे हैव मुकेश चौधरी दे हैव गुरजन कमलेश नागरकोटी. एग्जैक्टली यार कमलेश नागरकोटी भी बाहर है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द वोस्ट क्योंकि आज जो हिसाब से आरसीबी ने स्लो विकेट के ऊपर थ्रैश किया है तो दैट वाज सीमिंग वेरी बिग कंसर्न फॉर मी कि ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ और ऐसी बॉलिंग के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट 160 भी चेज कभी नहीं हो पाएंगे उससे बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली बहुत ही गंदा फेस था उनका
बैटिंग लाइनअप का, तो मुझे बहुत कंसर्निंग वही चीज लग रही थी कि ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ, बिकॉज दीपक हुड्डा एंड राहुल त्रिपाठी दो बोथ डू नॉट फिट इन। दो तो नहीं हो आएंगे, अगर फिट ही नहीं होंगे, ट्राई यस। करना है तो कोई एक को ट्राई करो, बट दोनों के दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बैटिंग लाइनअप में खेल सकें। तो मेरे हिसाब से तो विजय शंकर should be in the next match, as well as Devon Conway should also be in, and Sam Curran should be sitting out because Sam Curran is not even helping with the batting, not even helping in the bowling there. 3 overs 34 runs Sam Curran को आज पड़े हैं बैटिंग में, 13 बॉल 8 रन, so again Sam Curran is proving to be a liability. I don't think so that Sam Curran will be given should not be given more chances, because there are some great players sitting out there. So I think that should be it from their end, because बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी हैं, और ऑल्सो मैं ये चीज नोटिस की कि विद इन 2 overs आज रजत पाटीदार के 3 कैच ड्रॉप हो रहे हैं। 3 कैच है। खलील अहमद एक ड्रॉप कर रहा है, एक त्रिपाठी त्रिपाठी वाला दीपक हुड्डा का तो हाथ का था, मतलब। हाथ का था, बट उसके हाथ नीचे लगने के बाद घुसा। एंड दीपक हुड्डा ड्रॉपिंग अ सिटर कैच। इससे तो आई थिंक कि दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज वहां से ही गेम चेंज हो गई, बिकॉज उसने बहुत अच्छा मारना स्टार्ट कर दिया। एंड बिकॉज इवन लास्ट ओवर गिविंग टू सैम करन, इवन लास्ट ओवर टू सैम करन, तो फर्स्ट टाइम आई थिंक दैट्स सेंस नहीं बन रहा था, सेंस नहीं बन रहा था, बट सीएसके वाज डिड नॉट हैव उनका जो स्पिनिंग ट्रैक था वो सही, मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। तो 7.6 ओवर में रजत पाटीदार बैटिंग करने आ रहा था, उसके बाद वो मतलब 11.3 पे उसका कैच ड्रॉप होना, और उसके बाद उसने जो मारे हैं रन्स, और ही गॉट आउट एट 18.1, सो ऑलमोस्ट 11 ओवर्स तक उसने बैटिंग करी है। तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस फॉर सच बैटिंग का कुछ सेंस नहीं मारा, तीन तीन उसके कैच ड्रॉप हो रहे हैं, दैट ऑल्सो is going to hurt somewhere. Also, something that is looking concerning is Kohli's form there. Kohli was struggling to time the ball. It is just 30 बट balls, 31 runs. So again, that was a concern for them. But because of Phil Salt's fast gameplay there, 16 balls, 32 runs. And again, Padikkal coming in and playing fast. So but if you see the top four batters, may just Kohli struggle to time the ball. Rest all, Rajat Patidar batting at a strike rate of 159 was a great thing there. And that's what the game changing moment was. And also Tim David 8 balls 22 runs was also definitely the game defining moment there. एक्चुअल डेप्थ आरसी, सी हम लोग बात करते कि सीएसके हैज बैटिंग डेप्थ, बट एक्चुअल बैटिंग डेप्थ वाज आरसीबी की। दे हैड कृणाल पंड्या बैटिंग एट नंबर 8 और नंबर 9 आई गेस, व्हिच लाइक ही इज अ प्रॉपर डेजिग्नेटेड बैट्समैन, और वो आज बैटिंग कर रहा था। लेट मी चेक, आई थिंक नंबर 9 पे आया था, आफ्टर 7 विकेट्स वेंट डाउन वो आया था, मतलब दैट डिफाइंस कि हाँ, 6 आफ्टर 6 विकेट, सो ही वाज बैटिंग एट नंबर 8, उसकी 7th विकेट, ही वाज बैटिंग एट Found नंबर him as 8। a batsman as such, but yeah, फिर भी Kunal नहीं, Pandya नो can be नो, trusted like be a player like ही, Ravi Ashwin probably, but बट नो नो, if you see Krunal Pandya is more sort of a batting all-rounder when you compare it with Ashwin, so he bats really well. So if he is batting at number 8, with it defines the depth that RCB has now. and RCB literally played a very good quality of cricket, to be very honest from my end, because मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि they were struggling at any point. I after press after match मैं देख रहा था, तो रजत पाटीदार was telling in the interview that we had pretty much planned to make 200 runs and put the pressure on CSK, because anything around 160 170 would CSK could have easily won the game from us. So we thought to put those extra 20 30 runs and put the pressure on them, and that exactly what hampered us, because अगर CSK का score 170 होता तो it could have been quietly chaseable, because जो Quite, yeah. बैटिंग हुआ, तो that was the very right mindset of Rajat Patidar. And Rajat Patidar as a as a captain himself, excellent captaincy calls. दीपक हुड्डा का जो उसने कॉट बेन का रिव्यू लिया, ऑल्दो कीपर वाज नॉट एडमेंट, एंड Sure. ने भी कुछ सुना नहीं था भुवी के ओवर में जो उसने लिया, दैट वाज आल्सो एक्सट्रीमली एक बहुत ही सही कॉल था। तो बहुत सारी चीजें आई थिंक जितेश शर्मा इज डूइंग राइट बहुत सारी थिंग आई थिंक ये पाटीदार राइट कर रहा है वहाँ पे। Correct. एंड जितेश शर्मा
behind the wickets also didn't give him a great call there कि भाई है कि नहीं, but I think विराट कोहली आके भाग के बोला कि हाँ ले लो, he has heard something. So that was a great captaincy call. Also, again talking about MS Dhoni behind the wicket, 0.16 seconds. इट इट वाज ब्रिलियंट, लाइक इट कैन बी, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आई थिंक इफ धोनी इज नॉट बैटिंग, उसको बैटिंग ही नहीं करना है, तो ही कैन बी यूज्ड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कि भाई आप आओ विकेट कीपिंग करो, बिकॉज आज भी इफ यू आर कमिंग आफ्टर अश्विन इन अ रन चेस जहाँ पे द टीम नीड्स यू, आई डोंट थिंक इट्स कि कुछ काम का है, लाइक कि जडे एक्चुअली धोनी को जडेजा से ऊपर आना चाहिए था बिकॉज ऑफ द वे ही यूज्ड टू फिनिश मैचेस. Actually, what I heard from Guruturaj in the post-match presentation today was concerning was that they thought that 170 was a par score on this wicket, and making 196 is because of drop catches. So I think No, no, virtually the game that I agree. CSK virtually lost the game after the power play itself because their power play score was around 30. But yeah, that I agree, but अगर रन्स चाहिए 170 का 190 हो गया तो you should, I think धोनी should have gone ahead of Jadeja because at that time some boost was needed. I I completely understand the concern that people are raising कि धोनी को ऊपर बैटिंग करना चाहिए, धोनी को ऊपर बैटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट सी अगर द इफ द थिंग्स आर गेटेबल इट डेफिनेटली मेक सेंस. बट जो हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन था कि दे नीडेड अराउंड मोर देन 100 runs in like 8 overs, so I don't think the No, things are easily gettable from there. So according to me the concern is कि अगर things मतलब अगर होने ही नहीं वाला है तो आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस टू स्ट्रेस धोनी बाय सेंडिंग अबाउट. so so you are saying कि अगर 80 में फॉर एग्जांपल 75 80 चाहिए था तो धोनी आता धोनी नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो धोनी विल बी आउट बिकॉज 8 ओवर्स में इफ यू वांट 75 रन्स ऑन द व्हाइल चेजिंग, और अश्विन और धोनी दो बैट्समैन है आपके पास, तो यू थिंक धोनी आएगा? तो धोनी आएगा डेफिनेटली. अगर 8 ओवर नहीं आएगा. चाहिए तो आई धोनी आई डोंट थिंक, स्टिल आई नहीं. डोंट थिंक तो आएगा मैं बिकॉज मैं वही बोल रहा हूँ. तो दैट इज द ओनली थिंकिंग प्रोसेस दैट इज गोइंग अराउंड कि अगर 8 ओवर में 100 120 रन चाहिए तो धोनी नहीं ही आने वाला है बिकॉज दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज सिर्फ धोनी से वो नहीं ही होने वाला है. तो जो जडेजा जो तो अश्विन को हम एज अ ऑलराउंडर गिन रहे हैं have retired from the T20s, and Dhoni is also retired from the T20. So if CSK are 6 wickets or 5 wickets down and they still require, a handful of 70 to 80 runs, it is not going to be chased because we have ओके. been watching cricket from हम लोग CSK धोनी को देख रहे हैं लास्ट 15 20 15 18 सालों से. इसके लिए हम लोग को उम्मीद है कि हो जाएगा, बट इट एज इज ऑल्सो नंबर, राइट? क्योंकि अगर दैट्स हम दैट्स वही व्हाट आई एम चीज सेइंग. हम वही चीज अगर बार बार बोल रहे हैं कि धोनी क्यों नहीं आ रहा, अगर इफ 8 ओवर में 5 6 विकेट डाउन है और 80 रन 70 रन 90 रन चाहिए, इफ रिक्वायर रेट इज अराउंड 11, दैट्स व्हेन there are chances of Dhoni, Jadeja can do something for the team and they can win it. But if 8 overs में 120 चाहिए, I think it is next to impossible for CSK's lower order to come in and do it because they have a retired bunch of T20 guys out there who are bossing the lower order. So I don't think so it is going to happen. तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई कि आशुतोष शर्मा जैसी इनिंग कभी आ जाए धोनी के बैट से अभी, तो दैट वुड बी डेफिनेटली अ मिरेकल. एवरीवन यू नो मेरे ऐसा हर एक क्रिकेट फैन चाहेगा कि भाई धोनी के बैट से एक ऐसी इनिंग देखने के लिए लोग तरस जाएंगे अगर वो इनिंग्स आ जाएगी तो. बट आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना कम सून क्योंकि CSK लोअर बैटिंग ऑर्डर इज नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ डेप्थ. तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं बोल रहा हूँ कि या तो स्टार्टिंग में ही CSK शुड फायर लाइक दे यूज्ड टू डू विद डेवॉन कॉनवे. If CSK needs that hitting depth in the lower order, I think they should probably either make Sam Curran sit out and they should bring in Jamie Overton. So that is the only thing that they can do now. इसके इसके अलावा CSK के पास ऑप्शंस नहीं है, तो दैट वाज द ओनली पार्ट दैट वाज कंसर्निंग मी. एंड दूसरा थिंग जो चीज़ है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि अंशुल कंबोज, कमलेश नागरकोटी एंड गुंजनप्रीत सिंह अगर बाहर बैठे हैं तो आई थिंक देर आर हाई चांसेस दे कैन select any of those and try them rather than these guys sitting out there because all सब लोग young हैं, they have experience in their
धोनी है साथ में, तो आई थिंक दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। क्योंकि आज मैंने देख रहा था कि इट वाज नॉट एट ऑल इफेक्टिव। जो सीएसके का बॉलिंग था, दे वर बीइंग हिट, बहुत उनको बहुत मारा सीएसके के, मतलब जो है उसको बहुत ही राउंड द ग्राउंड मार पड़ रही थी। तो दैट वाज कंसर्निंग, बिकॉज इफ यू सी कि हार्डली ऐसा होता है कि अश्विन और रवि जडेजा का कोटा भी पूरा नहीं हुआ। अश्विन हैड इकोनॉमी ऑफ 11, करण हैविंग इकोनॉमी ऑफ 1130, रवि जडेजा हैविंग इकोनॉमी ऑफ 1230। सो इट मेक्स नो सेंस कि इतना ज्यादा इकोनॉमी होने के बाद भी दे वर बीइंग हिट अराउंड द ग्राउंड। इफ यू सी खाली तीन ही बॉलर्स ने अपना कोटा पूरा किया, दैट इज पथी राणा ने कोटा कोटा पूरा किया विद इकोनॉमी ऑफ 9, नूर अहमद ने कोटा पूरा किया विद इकोनॉमी ऑफ 9, एंड खलील अहमद ने कोटा पूरा किया विद इकोनॉमी ऑफ 7। सो द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड इज कि इफ सीएसके इज बीइंग हिट बैडली, समझो स्पिनर्स को मार रहे हैं, तो सीएसके डज नॉट हैव अ चॉइस, बिकॉज सीएसके के पास जो ऑप्शन है दैट इज सैम। अग्रीड। तो वही मुझे कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है, बिकॉज अगर सैम करन बैटिंग करके उतने रन बना रहा है विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम, 18 ओवर 30-35 रन सैम करन के बैट से निकल रहे हैं, तो फिर वो चीज काउंट नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके बैट से भी रन नहीं आ रहे, ही इज लैगिंग दैट बैटिंग एज वेल। और सैम करन ने कभी इतना अप द ऑर्डर बैटिंग किया भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सैम करन वाज टू अर्ली टू बैट, और उसके बैट से रन भी नहीं आ रहे थे, तो दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन सचिन रविंद्र एज वेल। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि करण ने भी फेंक दिया, उसके बाद रचिन रविंद्र को भी मारने में उसका इनसाइड एज लग गया, एंड सेम ओवर में दुबे भी डूबे। गॉट आउट। तो दैट वाज आल्सो कंसर्निंग फॉर मी। So I think that pretty much to make the order set there, CSK needs to take some decisions where uh, three probably three two or three players are going out, and some two or three new faces are coming in, because if with this bowling attack, even in cheap talk, if CSK is having more 5 games or 6 games, and if same thing is being repeated, I think it will be difficult for CSK then. Agreed. I think why not give chance to youngsters? I also feel कि दोनों लाइक त्रिपाठी और हुडा दोनों को बिठा के, एज यू सेड, शंकर एंड आंद्रे सिद्धार्थ को, बिकॉज आंद्रे सिद्धार्थ इज लाइक जो हाइप मिला है और सुनने में आया लाइक ही इज अ वेरी गुड हिटर, सो व्हाई डोंट ट्राई हिम लोअर डाउन द ऑर्डर। I completely agree, but अभी lower down the order के वो से ज़्यादा the issue that I saw in CSK is कि the the upper order is not firing, to be very honest on my side। जो ऊपर का ऑर्डर है वही फायर नहीं हो रहा है। इन लास्ट मैच ऑल्सो इफ यू सी कि जो ऊपर का ऑर्डर था सीएसके का, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन गायकवाड़ के ही बैट से बॉल लग रहा था, और गायकवाड़ ही मार पा रहा था। तो मुझे वही पार्ट कंसर्निंग लग रहा है कि लास्ट टाइम उन्होंने 6 ओवर में 62 करा था, एंड दिस टाइम इट वाज जस्ट 6 ओवर्स 30 रन्स। तो मुझे वही पार्ट कंसर्निंग लग रहा है कि ऐसे बैटिंग के साथ इट वुड बी मोर डिफिकल्ट। तो रादर आई फील कि डेवन कॉनवे वाज अ मच वेरी स्मार्टर एंड वेरी गुड चॉइस देन आंद्रे सिद्धार्थ, क्योंकि एक बार विनिंग बेस में आ गए देन दे कैन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट द थिंग्स। बट एज ऑफ नाउ सी, अभी तो 10 से बाहर जा रहा है, गुवाहाटी में अगला मैच है सीएसके का राजस्थान के सामने। तो I think rather than they should, just try with their experience bunch of guys now, come to winning ways, and that's when they can, try with Andre Siddharth, or they can probably get Gunjan Preet in, or Kamlesh Nagarkoti, or Anshul Kamboj. So मेरे नोइंग हिसाब से तो वही चीज सीएसके, नोइंग सीएसके आई डाउट कि चेंजेस करेंगे, बट हाँ, नीड द इश्यूज नीड्स टू बी एड्रेस, लाइक जितना जल्दी हो सके उनको एड्रेस करना ही The पड़ेगा। issue I see, so this is not that I don't think that this the CSK is now that old CSK where Dhoni used to go in with the players, and but the management is also the same management, but I still feel that either Deepak Hooda or Rahul Tripathi needs to go out for sure, and I think the first one to be dropped will be Deepak Hooda, because if CSK are not looking at any foreign opener and they are going to back Sam Curran, then I think the only choice they have is to drop Deepak Huda and get Vijay Shankar in. विजय शंकर। Because they don't have any other opener, and राहुल त्रिपाठी अगर वन डाउन आके, अगर गेम का फ्लो समझो अच्छा है सीएसके का और विकेट जाता है, और राहुल त्रिपाठी ने अगर स्लो कर दिया वो गेम का मूवमेंट वहां पे, तो दैट वुड आल्सो बी अ ग्रेट कंसर्न देन। तो CSK probably needs a very stable batting lineup. That's all I can say, because bowling lineup, see, there can be a bad day for bowlers as well.
So I'm not blaming the bowling completely, but yeah, Sam Curran, I don't think so is a good fit in this CSK side for me as of now. So I think the first person to be dropped will be Sam Curran and Deepak Hooda. Those two guys will be thought about in the next game for sure. For Rahul Tripathi, I think they might back him as a opener because they don't want a foreign player in there. So I think Rahul Tripathi might get backing for a couple of games, but Rahul Tripathi has been having a pretty bad year, as I've been saying in my couple of back episodes that Rahul Tripathi 1.5 साल से कुछ performance नहीं दे रहा है, तो that will be a tough call. So as a CSK fan, it was a tough call, but let's see. according to my prediction, RCB won, so I have typically won and you guys have lost. So that's but Let's see. I'm feeling extremely good for RCB that they have now trust in their bowling department Yes. as well as they are firing with batting. An extremely good game of cricket RCB is playing. So RCB is playing like typical, the India team that plays cricket, trying to choke the opponent rather than giving some freebies. And the best thing that I liked about RCB now is that when they know they have won the match, they started, experimenting by giving overs to spinners in the end as well to see what they can do. But yeah, it was great, and it was great to see Bhuvaneshwar Kumar fit Cool. and Yes. yeah, He's those overs there. So it was, pretty much happy to see him bowl 3 overs on top front, just giving 20 runs and getting 1 wicket. So that was great. So I CS think going further, I think going further, RCB's like performance will highly be dependent on their two frontline bowlers like Josh Hazelwood and Bhuvi. दोनों की strength एक ही है, taking wickets in the power play, and if they both fire, आज देख लिया क्या हो सकता है. for the RCB, I just have one concern, that is that they have a lot of Englishmen in there. So if to trust those Englishmen that they stay in form is pretty difficult. But by God's grace, they're playing a really good game of cricket. So I just appreciate it because Phil Salt is there, Livingston is there. So there are a couple of English guys out there who are in RCB. So it takes like just one match for uh, an English guy to get out of form. And Livingston is not in form yet, But but Phil Salt is in form. still they are firing. Still they are firing. Yeah, yeah. But because that's because of Phil Salt. So just waiting if Phil Salt stays in form for the season for at least more 5 to 6 matches for them, because their batting lineup is also again everything is going to fall on Rajat Patidar's shoulders and Virat's shoulders if Phil Salt fails, because Devdutt Padikkal has been consistently inconsistent since the past few games. So again, that will be a concern for them. But yeah, that's it. Well played RCB. That's all I can say. So they really had an Yes. extremely great game. Deserve to win. They deserve to win for sure. If any team is playing a good game of cricket, so rather than be calling it a upset, it should definitely be termed as a the cricket should win. That's all I can say. The team that plays good cricket should definitely deserve to be win, rather than any of the teams winning it by fluke. So that's what we are seeing as of now in this IPL. So yesterday we saw LSG win. They definitely played a good brand of cricket there. And today we saw RCB, breaching the fortress after 17 years. Last time they won in Cheapok was in 2008. 2008. Yeah, today is 2025. So they are winning after 17 years. And Rajat Patidar is just, extremely looking good in the way he's captaining, the way he's, batting out. So, yep, it was a great game of cricket. Hope CSK can, look for winning ways in their upcoming game that is on Sunday. So, looking forward to that game. So, thanks, guys. That's our time. That was the preview for. Thank you guys. Thank you, guys. That was the preview for the CSK RCB match. A very deep preview therein because two CSK fans discussing about the match. That's the only reason it was a too long review. But yeah, thanks, guys. Please like, subscribe, share the channel. Thanks for your support.